condition for constructive and destructive interference. So suppose the displacement of two light waves from two coherent sources S1 and S2 at a point P on the observation screen at any time t is given by S1, Y1 and Y2. So let us we have to consider here. Okay, source, there are two sources. One source is S1 and the other source is S2, and source S1 produce the displacement is Y1 and source S2 is produce the displacement Y2, where Y1 is A1 sine omega t. This one is Y1 and Y2 is A2 sine omega t plus phi. Y1 is the displacement, where A1 is the first amplitude of first waves and A2 is the amplitude of second waves. Yes. Okay. And as I told you, these two waves should be coherent. Coherent, that means of same frequency and constant or same phase difference. Danger. Yeah. Now, uh, due to the superposition, by superposition principle, as we know that this one is there are since there are two waves, so you can write like this: y equal to y1 plus y2. If there are more than two waves, you can simply add up in form of vector sum. Okay, and What are waves? as you know, y equal to y1 is a1 sine omega t, a1 sine omega t, and plus y2 is a2 sine omega t plus phi. As you know that this this one is sine a plus b. This one is based on formula sine a plus b, and you know sine a plus b is equal to sine a into cos b plus cos a Yes, into cause, sine yes, I b. know. Right, cos a into sine b. So we will continue with this part. We are going to write y equal to a1 sine omega t plus a2 sine omega t into cos phi plus a2, after multiplication this one, a2 cos omega t into sin phi. Then y equal to a1 plus a2 because you are taking the common sin omega t, so a2 cos phi, a1 plus a2 cos phi after taking common sin omega t Yes. plus a2 sin omega t sin phi, right, first sin phi into cos omega t, arrange like this one. In next step we will continue. At first we are going to consider this one, a1 plus a2 cos phi and a1 sin phi. So now put a1 plus a2 cos phi, a2 cos phi is equal to a cos theta.
and this one is A cos theta, and A2 sin phi, A2 sin phi is A sin theta. This one is theta, not phi. A cos theta and A sin theta. This one considered as equation 1. This one is considered as equation 2. And then uh, you can write like this: y equal to, now it will become A cos theta into sin omega t into a sin theta cos omega right plus plus A sin theta into cos omega t. I'm taking this one in a box. Next may you can write this one like this: y equal to A sin omega t plus theta in form of sin A plus B. yes, And in next step you are going to add these two equation 1 and 2, adding is at first squaring and adding equation 1 and 2. So I am going to write here squaring and adding equation 1 and 2. Then what you get? You will get that A square cos square theta plus A square sin square theta. This one is equal to A1 a square plus A2 cos phi, squaring of this one, plus A2 square sin square phi. Right? Now yes, after that, if you take common A square, you get find that sin is cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1. So directly you can write here A square is equal to A1 square plus A2 square cos square phi plus sin square phi from this part plus 2A1 A2 cos phi. And finally you can write here A square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, and take this one as in a box like this. This is your equation 3. You consider this one, this equation is 3 equation. But yes, you know, what about the intensity? I am going to write here, as I discussed earlier, that intensity of waves, intensity intensity of wave is directly proportional to
amplitude square of amplitude. That means you can write like this: I equal to k a square, where k is the proportionality constant. And for this one, and for next, you can write like one I1 equal to k a1 square. For next I2, consider this one is I2 equal to k a2 square. And like this. Now finally you can write this equation in form of k a square is equal to k a1 square plus k a2 square plus 2 root k a1 plus sorry, not plus, into root k a2 cos phi. Then this one is equal to I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. In this equation gives the total intensity at a point where the phase difference is phi, because in this equation the phase difference is phi only, singly phi is the phase equation. And I1 and I2 is the intensity, this I1 and this I2. These are the intensities of individual source. अलग अलग सोर्स की इंटेंसिटीज हैं ये. And the total intensity also contains a third terms. ये जो third terms आपके पास है, this is 2 root under I1 I2 cos phi. This term is called interference term. This term is called interference term. इस टर्म को इंटरफेरेंस टर्म बोला जाता है. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट में हमारे साथ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात होती है. तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ इस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को, क्योंकि इसके साथ यहीं पे समझ में आ जाएगा अच्छे से हमारे पास. देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो जब भी बात होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, हमारे दिमाग में आता है कि इस आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी. तो आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब जो ये कॉस फाई आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कॉस फाई, इसकी वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम हो. कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब ये 1 होता है. और 1 ये कब होगा? जब फाई की वैल्यू जो है 0 डिग्री हो, अदरवाइज 2 पाई पे हो, या फिर 4 पाई पे हो, एंड सो ऑन. इस तरह की वैल्यू पे होगी तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, है ना. अब सिंस फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, इस दोनों के बीच की फेज डिफरेंस कितने की है? 2 पाई की. इससे फिर इसकी बीच की फेज डिफरेंस कितने की है? 2 पाई की. तो फेज डिफरेंस, यू कैन नो अबाउट दिस फेज डिफरेंस. अगर आपसे पूछा जाए तो फेज डिफरेंस इस टाइम ऑफ 2 पाई, है ना. और 2 पाई की जो पाथ डिफरेंस होती है. नो, व्हाट अबाउट द पाथ डिफरेंस? तो अबाउट पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के बारे में आप देखो, यहाँ पे ड्रॉ करो, खुद से समझ में आ जाएगा. क्लियर है बिल्कुल. ये एक वेव है, दिस वन इज अ वेव. और यहाँ पे वेव में अगर आपके पास ये पाई है, ये 2 पाई है,
तो इसकी पाथ डिफरेंस कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, लैम्डा की होगी। Yes, sir. तो लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया लैम्डा, और फेज डिफरेंस आपके पास आ गया 2 पाई। ओके, अब Yes, sir. बात समझने की है यहाँ पे। देखिए, अगर दोनों के बीच का हमें टर्म देखना होगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को हमें रिलेट करने की जरूरत है यहाँ पे। दैट मीन्स अगर आप समझो कि लैम्डा फॉर्म्स लैम्डा विच इज द पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस फॉर्म्स द फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, देन यूनिट पाथ लेंथ कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा का Pi by करेगा। lambda. ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा एग्जैक्टली। अगर मैं कहूँ किसी भी एक अननोन पार्ट पे कोई पार्ट मुझे बोल दिया जाए, इस पॉइंट पे बोला जाए कि भाई बता दो ये पॉइंट जो है P है, इस पॉइंट पे हमारा पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो यू कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू P, ठीक है। ये Yes, बहुत sir. ही इम्पोर्टेंट टर्म्स होने जा रहा है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये बताएगा। ये जो P है इसको 2n pi by lambda भी लिख सकते हैं क्या इसकी जगह पे? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मैं उसको पाथ लेंथ में मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि अभी आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखिए, अब मैं पाथ लेंथ की, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाथ लेंथ, क्योंकि ये पाथ लेंथ है आपका, ये मैंने बता दिया है, ये पाथ डिफरेंस है। लेफ्ट साइड में जो हमने लिया है ये पाथ डिफरेंस है, और राइट साइड में जो लिया है मैंने ये फेज डिफरेंस है। इज इट क्लियर? Yes, sir. देन व्हाट अबाउट जब ये 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पी, दैट मीन्स ये फेज डिफरेंस, दिस फेज डिफरेंस इफ इट बिकम्स जीरो, अगर ये जीरो होता है, और तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप देखोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू जीरो, p की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, राइट? Yes, sir. ये फर्स्ट हो गया। एंड व्हाट अबाउट 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई इंटू पी अपॉन लैम्डा इक्वल टू, दिस वन बिकम्स लैम्डा, अगर ये लैम्डा के इक्वल हो जाए तब क्या होगा, तो फेज डिफरेंस आपकी हो जाएगी 2 लैम्डा की। Yes, व्हाट sir. अबाउट, अब यहाँ पे मैं पार्ट इसको ले रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार जीरो ले लिया, एक बार 2 पाई ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट में मैं 4 पाई लेने जा रहा हूँ। तो व्हाट अबाउट 4 पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू 4 पाई, देन p इक्वल टू व्हाट, p इक्वल टू 3 लैम्डा, एम आई राइट? Yes, sir. सब सेकंड वाले P is equals to 2 lambda में वो pi होना चाहिए था ना? ये Is equals to pi. इज इक्वल टू पाई, राइट, दिस वन इज इक्वल टू पाई होना चाहिए, तो 2 लैम्डा। अब ठीक है, Yes, sir. लेकिन ये 2 पाई नहीं होना चाहिए, Yes, sir. मैंने तो 2 पाई लिया था, तो 2 पाई होना चाहिए ना। Yes, sir. और जब आप 4 पाई ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक Yes. चीज मैं और बताऊंगा, अभी एक मिस्टेक और है, अब आप ध्यान से देखोगे तभी आपको पता लगेगा, ये 2 लैम्डा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लग जाएगा ये 2 लैम्डा नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो p इक्वल टू इस केस में क्या मिल रहा है आपको, लैम्डा। Lambda. जी हाँ, p इक्वल टू लैम्डा, p इक्वल टू लैम्डा। थर्ड केस जो है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू 4 पाई रख दिया, तो अब ये कितना मिलेगा, ये होगा 2 2 लैम्डा, lambda. राइट, एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये जो आपका पार्ट होगा p इक्वल टू जीरो, पहला जीरो है आया, दूसरा लैम्डा आया, थर्ड आ गया 3 लैम्डा, एंड सो ऑन, दिस वन इज इक्वल टू n लैम्डा। मिल गया ये? Yes, तो ये sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। सेम अब मैं डिस्ट्रक्टिव की बात जब करूंगा बेटा, तो पहले मैं लिखता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बाद आते हैं।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है हमारे पास ये आप देखो, जो कंस्ट्रक्टिव का है उसके बीच का गैप हमें देखना पड़ेगा। 0 से पाई के बीच का गैप क्या है? 0 से 2 2 पाई पाई। के बीच का, 0 से 2 पाई के बीच में पाई आएगा। यस सर। 2 पाई से 4 पाई के बीच में 3 पाई आएगा। ओके यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने की मतलब हो गया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। मिनिमम कहने का मतलब cos फाई इस केस में यहाँ पे आपके पास -1 होना चाहिए। और -1 कब होगा? जब फाई इक्वल टू आपके पास पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ऐसा केस होगा तब। और इस केस में फिर आप देखोगे कि आपके पास जो मिलेगा वो देखने वाली बात होगी कि आप कंपेयर करोगे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पी। दिस वन इज इक्वल टू, यू आर सेलेक्टेड, दिस वन इज इक्वल टू, क्या सिलेक्ट करना है? तो पाई, 3 पाई, 5 पाई and so on. So you will get the value of P, that is phase difference, which is path length, which is equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on. In general form you can write like this, 2n minus 1 lambda by 2. Similarly, in general form you can just like you have written here in uppercase for constructive interference is n lambda, है ना? Here you have written here, this is n lambda. यस तो सर। इसके पीछे वाले में आपने क्या लिखा? 2n minus 1 into lambda by 2, which is for destructive interference. क्लियर है ये?